साइड में कर सकते हैं, पास में आ जाइए। तो रिक्वेस्टेड टू गुरु महाराज जी तो कंटिन्यू श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। भगवद गीता हरि बोल। Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Praman Saparivar Acharya Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा। आप सभी लोग को क्या करते हैं, शांत रहिए, शांति से बैठ जाइए। हरे कृष्णा। जिन लोगों को प्रसाद लेना हो कृपया करके शांति से अपना प्रसाद लेकर के बैठ सकते हैं, या फिर बाहर जा सकते हैं। It will remain same for a while. This voice will remain same for a while. Later on they will leave. They are taking their prasadam. Later on they will leave. Okay? So we can start the same way. Start. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So the prasada we serve after class. Prasada will serve after class. Okay. Prasada will serve after class. जो लौकिक होने के साथ ललित प्रसाद हुए, Brahmesti Paramamanti Bhagavaniti Satyate. God has
three aspects. भगवान को Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Niti Satyate. This is the three aspects of God. Brahman is impersonal aspect of the Lord. The first aspect, Brahman, Brahmeti. जो ब्रह्म है भगवान का निराकार स्वरूप है, Is impersonal. वो है निराकार. The impersonalist people, then they want to be liberated of all entanglement, material entanglement, and then want to go in the Brahma Yoti. जो निराकार होते हैं वो सभी प्रकार के भौतिक जो बंधन है उनसे मुक्त होना चाहते हैं और वो ब्रह्म ज्योति में भी होना चाहते हैं. Is the effulgence of the Lord, जो भगवान के ब्रह्म light. जो दिव्य प्रकाश जो भगवान के शरीर में उत्पन्न होता है उसमें समावेश होना चाहते हैं. That is the first aspect, the first one. ये पहला जो है रूप है. And the second aspect is Paramatma, Paramatma in the heart of everybody. जो दूसरा प्रकार है वो है परमात्मा. He is the witness. और ये जो है He can see permanently what you think, what you want, what you do, everything. वो हर चीज को देखते हैं हम क्या कर रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं जो भी कार्य हम करते हैं वो. This is the second aspect. ये दूसरा प्रकार है परमात्मा का. The perfect, the complete aspect is Bhagavan. और तो पूर्ण रूप में वो है भगवान को. Parameti Paramatmeti Bhagavan iti Satyate. जैसे कि कहा गया है परमेश्वर परमात्मा भगवान ईश्वर है. So we are personalists. तो हम जो है साकारवादी हैं. Yeah. In our Sampradaya, everybody is personalist. तो हमारे संप्रदाय वो साकारवादी हैं. We know by Shastra, we know the supreme aspect of the Lord. तो हम शास्त्र के द्वारा भगवान के परम रूप को जानते हैं. Those impersonalists, those who want to the Brahma Yoti, then can get there 10,000 years, 100,000 years, then can get there. There is no material influence. तो जो भगवान को निराकार स्वरूप मानते हैं उनको जो बहुत समय लगता है, 1000 वर्ष, लाख वर्ष लगते हैं भगवान को समझने में. It is transcendental. उनको ट्रांससेंडेंटल The gunas don't touch, the gunas don't disturb those who are in the Brahma Yoti. वो वहाँ से ऊपर हो जाते हैं, लोग ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं. Adhyatmika klesha, Divautika klesha, Vidaivika klesha. These three kind of suffering there is not. जो 3 प्रकार के जो ताप होते हैं आगे जाके काम होते आगे जाते हैं, ये 3 प्रकार के ताप वहाँ पर नहीं उपलब्ध होते हैं. There is the Jivatma, individual, but there is no body. वहाँ पर प्रत्येक जीव में एक उनका वास्तविक अपना स्वरूप होता है. Everything is light. और सब कुछ वहाँ पर सब कुछ सत्य है. But there is no suffering. वहाँ पर कोई कष्ट नहीं है. It's no happiness. और यहाँ पर कोई दुख भी नहीं है. It's no relation. यहाँ पर कोई संबंध भी नहीं है. It's no body. और यहाँ पर कोई शरीर भी नहीं है. So people stay there for many, many years, but after follow down again in the material world. और जो ब्रह्मज्योति में प्राप्त ब्रह्मज्योति प्राप्त होने के उपरांत वो कई लाखों सालों तक वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद उनका पतन हो जाता है
और वो भौतिक प्रकार से गिर पड़ते हैं। This is the place of impersonalist. ये निराकार वाले में बात होता है। For that, we will read today one slok where Krishna explained the impersonalist get much difficulties. इसलिए जो आज का हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है किसी प्रकार से जो हम भगवान को नहीं मानते हैं, उनको कष्ट देने पड़ते हैं। And there is different kind of impersonalist. और जो निराकारवादी होते हैं, उनके भी कई प्रकार के निराकारवादी होते हैं। Pantheista. The pantheist is one line of impersonalist. Pantheist is one class of impersonalist. तो पहला क्लास है, Understand? No understand. The pantheist is one kind of impersonalist. The pantheist is one kind of impersonalist. जो पहला श्रेणी है वो पंथिस्ट। Yeah, pantheist. 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 That means everything is God. और वो जो श्रेणी मानती है कि हर चीज भगवान है। Yeah. And that is true. We cannot say no, it's not like that, because everything is God, everything coming from God. और वो सत्य भी है, क्योंकि हमें हर चीज भगवान है। Even the material elements coming from God. यहाँ तक कि ये जो भौतिक जड़ वस्तु है, वो भी भगवान से ही उत्पन्न होती है। Many years ago, I found one impersonalist. कई साल वर्षों पूर्व मैंने एक निराकारवादी से मिला। He was pantheist. वह पैंतीस था। He said all is God. और वो कह रहा था कि सब कुछ भगवान है। And he took one stone and he asked me, "What you see? What is that?" तो उसने एक पत्थर उठाया, मुझसे पूछा, आप क्या देख रहे हैं? So I say, "I see one stone." और मैंने कहा, मैं पत्थर को देख रहा हूँ। And he said, "Not, that is God." और उसने कहा, नहीं, ये पत्थर नहीं बल्कि भगवान है। But there is one problem. The stone, the material energy is temporary. लेकिन जो भौतिक शक्तियाँ हैं भगवान की, वो है temporary, And God is eternal. और जो भगवान है वो नित्य है, शाश्वत है। You can worship any material thing, आप कोई भी जड़ वस्तु को नहीं भूल सकते, but that will be temporary. That will be temporary. क्योंकि वो अशाश्वत है। Yeah, that will be temporary because the material energy is manifested and unmanifested. क्योंकि जो भौतिक शक्ति होती है वो प्रकट होती है और अप्रकट होती रहती है। Material world is here. और वो जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तो ये भौतिक All the material energy go back to a Vishnu. और वो सभी विष्णु में समावेशित होता है। So also one kind of impersonalism. तो ये जो 35 होते हैं वो एक प्रकार के निराकारवाद हैं। Pantheist, that means everything is God. और वो मानते हैं हर चीज हर वस्तु भगवान है। Mayavadis is also one kind of impersonalism. जो दूसरी श्रेणी है वो है मायावादी।
there is so many, until now, there is followers of Shankaracharya. और वो शंकराचार्य के जो है अनुयायी होते हैं। Shankaracharya, he come to present a aspect impersonal. And the follower of Shankaracharya then say everything is Maya. और जो शंकराचार्य के अनुयायी मायावादी होते हैं वो कहते हैं हर चीज माया है। The pantheists then say everything is God. पैंतीस मानते हैं हर चीज भगवान है। And the Mayavadis say everything is Maya. और मायावादी मानते हैं कि हर चीज माया है। And all the two are in the wrong way. और दोनों ही श्रेणी गलत रास्ते में अग्रसर रहती है। Because the impersonalist, he must born again, unlimited life to understand. To understand God is a person. क्योंकि इन दोनों श्रेणियों में अनेक कोटि जन्म लग जाते हैं भगवान को समझने के लिए। Mayavadis and Sunyavadis. मायावादी और शून्यवादी। Yeah, Sunyavadis also are impersonalists. जो शून्यवादी लोग तीसरी श्रेणी में वो शून्यवादी वो भी निराकारवादी होते हैं। The Buddhist people, for example, Buddhist people then are Sunyavadis. जो बुद्धिस्ट होते हैं वो शून्यवादी कहलाते हैं। Sunya in Sanskrit, Sunya means zero, zero. Zero. तो संस्कृत में शून्य को जीरो कहा जाता है। Sunyavadis then say that world is Maya, and when we overcome this influence of Maya, we reach in the Nirvana. तो जो बुद्धिस्ट होते हैं शून्यवादी होते हैं वो भी हर चीज को माया मानते हैं और वो कहते हैं कि जब हम माया से मुक्त हो जाते हैं तो हम निर्वाण में And there is full peace. Peaceful. और वो मानते हैं कि Peaceful situation. वो मानते हैं कि जो ये वो स्थिति होती है वो बहुत शांतिमय स्थिति होती है। Yeah, because there is just void. क्योंकि वो शून्यवादी होते हैं तो उनका ये मत है। There is anything. और वो कुछ भी नहीं है। So there is different kind of impersonalism. तो इस प्रकार से जो निराकारवादी होते हैं उनके अनेक श्रेणियां हैं। The Buddhists then don't believe in the Jiva Atma and Paramatma. Everything is Maya. जो बुद्धिस्ट होते हैं ना तो जीवात्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं। वे कहते हैं कि हर चीज माया है। Many years ago, I went to Dwarka. कई साल पहले मैं द्वारका गया। And there is thousand people follow Shankaracharya. और वहाँ पर मैंने अनेक हजारों लोग शंकराचार्य के अनुयायी सुने। And I asked one of them, but you have one guru. तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा क्या आपका कोई गुरु है? And then say, of course, Jagat Guru Shankaracharya. और उसने कहा हाँ मेरा हमारा गुरु है वो है जगत गुरु शंकराचार्य। And I was confused. In that time I was before reading Srila Prabhupada book. It was maybe 1980. और मैं संशय में पड़ गया। दो बात की जो मैंने पुस्तकें नहीं पढ़ी थी उससे पहले। Yeah. And I was confused. Say I then our impersonalists follow Shankaracharya. Everything is Maya, but they worship Krishna. तो संशय में पड़ गया कि जो निराकारवादी होते हैं मायावादी होते हैं वो शंकराचार्य को मानते हैं लेकिन शंकराचार्य भगवान कृष्ण की भी वर्शिप करते हैं। And they worship Krishna in very nice way. और वो जो भगवान की बहुत ही सुंदर तरीके से। I remember one time for
Janmastami, I think there was Janmastami maybe, the big festival, then covered all the temple with mangoes. Mangoes. तो मुझे एक त्योहार याद आ रहा है कि जन्माष्टमी का समय था और जो निराकार मायावासी हैं उन्होंने पूरे मंदिर को आम से सजाया हुआ था। One today before coming truck full of mango. और एक पूरा जो है ट्रक आम से भरा हुआ। I don't know how they do all covered with mango. मुझे नहीं पता है कि उन्होंने किस प्रकार से वो सजाया हुआ है। Then do this service to satisfy Krishna. तो उन्होंने कहा कि ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। So I don't understand that. How is that? Then are Mayavadi, then don't believe in God, the Supreme Person, and then do very nice service for Him. तो कभी मायावादी भगवान को मानते हैं और छोटी-छोटी सेवाओं के द्वारा वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। But after few years, I start to read in Prabhupada book. और उसके कई वर्षों के उपरांत मैंने स्वामी प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना शुरू किया। And Srila Prabhupada explained, then follow Shankaracharya. और श्री प्रभुपाद की बताया है कि वो शंकराचार्य से बनी आई है। Panchopasana, then get from Shankaracharya Panchopasana, five different kind of worshipper. और वो भी शंकराचार्य के द्वारा दी गई 5 प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। That is by indication of Shankaracharya. जो शंकराचार्य के द्वारा प्रस्तुत की गई। Then worship Shiva. वे शिव जी के उपासक होते हैं। दुर्गा के होते हैं। Ganesh. गणेश जी होते हैं। Surya. सूर्य भी होते हैं। And Vishnu. और विष्णु के उपासक भी होते हैं। But Srila Prabhupada say, then consider everything is Maya. और वो फिर भी कहते हैं कि हर चीज माया ही है। Also Shiva. वे शिव को भी मानते हैं। Also Durga. दुर्गा को भी माया मानते हैं। Also Ganesh. गणेश को भी माया मानते हैं। Also Surya. सूर्य भगवान को भी माया मानते हैं। Also Vishnu. और विष्णु भगवान को भी माया मानते हैं। Everything is Maya. वो कहते हैं हर चीज माया ही है। So then follow this, they worship these 5 Panchopasana. Srila Prabhupada explained, they use that like one stair. To go up. तो वो जो है इस प्रकार से शंकराचार्य द्वारा दिए पंच प्रकरण को फॉलो करते हैं और एक सीढ़ी द्वारा ऊपर करते हैं। Then follow the instruction of the Guru, Shankaracharya, then say Jagat Guru. और वो शंकराचार्य को जगत गुरु मानते हैं। Yeah. Then follow the instruction, and by this devotional service, then go up in this chair. और Stair. तो इस प्रकार से अगर वो फॉलो करते हैं तो वो इस लैडर में ऊपर करते हैं। So when them reach up, और जब वो ऊपर करते हैं, then are Narayana. और वो नारायण बनते हैं। Then are God. God. वो जो है गॉड बनते हैं। And because then don't need anymore the stair, because you then throw away the stair. क्योंकि वो इस प्रकार से दुनिया करते हैं तो वो अपने आप को निश्चित नहीं करते। So we speak now just few kind of impersonalists. तो इस प्रकार हमने कुछ निराकार बातों के ऊपर When Srila Prabhupada went to America, he started to preaching. Well, the hippie people follow him. जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो उन्होंने जो हिप्पियों को प्रचार करना शुरू किया। And they start to Srila Prabhupada start to give class every day. और श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन वहाँ पर जो है कक्षाएं देते थे। And from the beginning, Srila Prabhupada speak many times about impersonalist.
और शुरुआत में दो बार कई बार मैं निराकारवादी के बारे में बताते हैं। At that time, these followers of Srila Prabhupada, this kind of hippie, then don't know anything about sadhana. और इस प्रकार से जब प्रभुपाद उनको बताया थे तो उनको साधना के बारे में बताया था। Then don't know even every day have to take a bath. यहाँ तक उनको ये नहीं पता था कि हर दिन नहाना होता है। Then here Srila Prabhupada give every day class, philosophical class. और इस प्रकार से जब वो प्रतिदिन शिला प्रभुपाद के द्वारा दिए गए सिद्धांत की क्लास सुनने लगी। So one day, one of these followers, one of these hippies, he asked Srila Prabhupada, every day you speak about the impersonalist. But where are these people? तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से प्रश्न किया कि प्रभुपाद आप प्रतिदिन जो है हर एक कक्षा में निराकारवादी के बारे में बताते हैं। कौन है निराकारवादी होते कौन है? Who is these people? निराकारवादी कौन है? And Srila Prabhupada said, you are. भगवान उसको कहते हैं कि तुम निराकारवादी हो। And that was like that because nobody know anything about God. That is also impersonalist. अगर कोई जानता नहीं है कि भगवान कौन है तो वो भी निराकारवादी है। So we read one slok of Bhagavad Gita. Prasada will be after class, no now. तो सभी से निवेदन है कृपया करके शांति से बैठे रहिए क्योंकि कुछ ही क्षण में 2 बजे सभी के लिए प्रसाद होगा। Yeah, don't round to the prasada. Don't round to the prasada. तो उसी से कृपया करके जो है ये घूमना बंद कीजिए और बैठिए। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Srimad Bhagavad Gita, it is chapter 12, text 4 is here. श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 12 और श्लोक संख्या No, excuse me, 5. आपके सामने 2 रुपये लिखा हुआ है। Klesho Vikatara Tejam Aryakta Sakta Chetasam Aryakta Higati Dukam Devavavira Vapyate Klesho Vikatara Tejam Avyakta Sakta Chetasam Avyakta Higati Dukam Devavavira Vapyate Klesho Vikatara Tejam Avyakta Sakta Chetasam Avyakta Higati Dukam Devavavira Vapyate. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए कुछ क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदा दुष्कर होता है। And the purpose of Prabhupada say the group of transcendentalists who follow the path of inconceivable, unmanifested, impersonal features of the Supreme Lord are called Jnana Yogis,
and persons who are in full Krishna consciousness, engaged in devotional service to the Lord, are called Bhakti Yogis. आपको में दो काम लिखे हैं अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अदृश्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है ज्ञान योगी कहलाता है और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं. Now here the difference between Jnana Yoga and Bhakti Yoga in definitively expressed. यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है. The process of Jnana Yoga, although ultimately bring one to the same goal, is very truthful. Whereas the path of Bhakti Yoga, the process of being direct service to the Supreme Personality of Godhead, is easy and is natural for the embodied soul. ज्ञान योग पर यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु यह अत्यंत कष्टकारक है जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और वेदधारी के लिए स्वाभाविक ही है. जीव अनादिकाल से वेदधारी है. By Jnana Yoga, one can become free from the material influence. तो ज्ञान योग के द्वारा जो है कोई भौतिक अशुभ से मुक्त हो सकता है, बंधनों से मुक्त हो सकता है. Can be detached. और वो जो है उससे अप्रभावित हो सकता है. But that is incomplete. That is incomplete. परंतु ये अपूर्ण है. It's incomplete because it's not enough to be detached. क्योंकि ये अपूर्ण इसलिए है कि ऐसा संभव नहीं कि हम पूर्ण रूप से उसे अप्रभावित करें. It's necessary to be attached with Radha and Krishna. इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी चीज से आसक्त होना. If you are detached of material activities and you are attached with Radha and Krishna, that is the perfection. और अगर आप भौतिक संसार से अनासक्त होते हो और भगवान से आसक्त होते हो तो ये जीवन की सफलता है. Perfection means pure consciousness. सफलता का मतलब होता है शुद्ध चेतना. When the consciousness is completely pure, you have not to born again. और जब कोई शुद्ध चेतना में होता है तो वो दोबारा जन्म नहीं लेता. And that is what happens in the Vaishnava way. और ये जो है वैष्णव का सिद्धांत है. By purification, go back to Godhead. और शुद्ध चेतना के कारण जो है वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होते हैं. But the impersonalist cannot go back to Godhead. जबकि निराकारवादी भगवान के धाम को नहीं जा सकते हैं. Because he don't believe in God. क्योंकि वो भगवान में विश्वास नहीं करते. The Mayavadi, Sunyavadi, any one of different kind of impersonalists cannot go back to the spiritual किसी भी world. प्रकार का निराकारवादी, मायावादी, शून्यवादी, संभववादी वो जो है भगवान के धाम को नहीं जा सकते हैं. So, the individual soul is embodied science, time, immemorial. जीव अनादिकाल से वेदधारी है. It is very difficult for him to simply theoretically understand that he is not the body. सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वो शरीर नहीं है. The first thing to understanding Krishna consciousness is Krishna is the enjoyer and we are the servant. तो हमें समझना चाहिए सबसे उत्तम तरीका है कि भगवान जो है स्वामी है और हम उनकी जो है सर्वेंट नौकर हैं. And the first teaching of Krishna in the Bhagavad Gita in the second chapter, the first teaching of Krishna that he teaching Arjuna, the first thing is we are not body, we are spirit soul. इसलिए भगवद गीता की शुरुआत इसी से होती है. भगवान बच्चे को बताते हैं कि तुम शरीर
Everybody must to understand this point. इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है. So everyone who reads Bhagavad Gita, he know I am not the body. तो इसलिए जो भगवत गीता को पढ़ता है वो समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ. I am spirit soul. मैं एक आत्मा हूँ. And even the new devotees, you see here is many new devotees. Even the new devotees then reading and then repeated, we are not body, we are soul. तो जो नए भक्त हैं वो भी इसको दोहराते हैं कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है. And the soul never die. और जो आत्मा होते हैं वो मृत नहीं होते. Na hanyapte hanyamane sarire. नहन्यते हन्यमाने शरीरे. Don't die when the body dies. जो शरीर नष्ट होता है आत्मा नष्ट नहीं होती. Even the new young devotees repeat that every day. तो जो है नए भक्त बोल सकते हैं. But if now one black snake come here slowly with everybody, maybe someone run away. लेकिन इस सिद्धांत को समझने के बाद भी कि हम शरीर नहीं आत्मा है, अगर एक मोटा काला सांप यहाँ पर आ जाता है तो कभी इधर उधर भागने लग जाते हैं. Then forget that. Na hanyapte hanyamane sarire. और वो विचलित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ना हन्यते हन्यमाने शरीर. Because they get jnana, information, then get no vigyana. क्योंकि उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है कि हम शरीर में आत्मा है, लेकिन विज्ञान नहीं प्राप्त किया. Vigyana means realization. विज्ञान का मतलब होता है आत्म. And to realize we are no body is necessary to practice bhakti yoga. और अगर हमें समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए हमें भक्ति योग का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है. When the consciousness become pure, you can understand. क्योंकि जब बुद्धि चेतना You शुद्ध can- हो जाती है तो वो समझ You इसके can- रास्ते को समझते हैं. You can realize that. वो उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं. There was one follower of Chaitanya Mahaprabhu. He was Paramahansa, completely out of the body conception. तो चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त थे, वो जो परमेश्वर Completely out. Haribol, sweet off this thing. महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, वो जो है परम धनी थे. And one time one snake approached and he took the snake and put it in his lap. और एक बार उनके सामने एक सांप आया और उन्होंने उस सांप को पकड़ा और अपने गोद में रख लिया. Because he was completely outside the concept of the body. क्योंकि वो पूर्ण रूप से जानते थे कि वो आत्मा शरीर नहीं अपितु आत्मा है. Another time he approached one tiger and he beat the tiger. और एक बार उन्होंने एक बाघ के सम्मुख गए और उस बाघ को पीटने लगे And the tiger go away. और वो बाघ भाग गया. That is writing in the Chaitanya Charitamrita. I forget the name of this devotee. ये वर्णन चैतन्य चरितामृत में दिया गया है. Murari Chaitanya was the name. Murari Chaitanya. उनका नाम था मुरारी चैतन्य. Completely out of the material concept of life. Completely out. वो पूर्ण रूप से भौतिक चेतना से बाहर थे. We see many examples of this, the Vaishnavas who was completely out. अनेक उदाहरण हैं जो वैष्णव के सिद्धांत का एक उदाहरण जिस प्रकार से शरीर की चेतना से पूर्ण रूप से मुक्त है. Therefore, the Bhakti Yogi accept the deity of Krishna worshipable because there is some bodily conception fixed in the mind. अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक रूप रहता है Which can be uplifted. जिसे इस रूप में दृढ़ किया जा सकता है.
Of course, worship of the Supreme Personality of Godhead in His form within the temple is not idol worship. मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मुख्य पूजा नहीं है, वैसे साहित्य में साक्ष्य मिलता है। There is evidence in the Vedic literature that worship may be saguna or nirguna. वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। Of the supreme possessing or not possessing attribute. मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है। Worship of the deity in the temple is saguna worship. मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है। For the Lord is represented by material qualities. क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। But the form of the Lord, though represented by material quality such as stone, wood, or oil paint, is not actually material. लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वो वास्तव में भौतिक नहीं होता। For example, you have one japamala. एक उदाहरण दे सकते हैं जप माला का, And you use it every day 2-3 hours. जिसका उपयोग आप हर दिन 2-3 घंटे कर सकते हैं। You can say this is made with the branch of tulsi. और हम कह सकते हैं कि जो ये जिस पे हम जप माला जो है वो तुलसी का तना है। That is material. और ये जो है भौतिक है। You can say like that, but it's not like that. परंतु ये ऐसा नहीं है। Tulsi is spiritual, and the japamala, because you use it every day, is also spiritual. क्योंकि तुलसी जो है आध्यात्मिक है, इसलिए जप माला जो उपयोग करते हैं वो कहता है। Everything what we use in the altar is spiritual. और जिस चीज को हम जो है जप माला यूज करते हैं वो आध्यात्मिक है। That is the absolute nature of the Supreme Lord. परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। A crude example may be given here. We may find some mailbox on the street, and if we post our letter in this box, they will naturally go to their destination without difficulty. यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र प्रेरिकाएं होती हैं। यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। But any old box or an imitation which we find somewhere but which is not authorized by the post office will not do the work. लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो तो उससे कोई कार्य नहीं हो सकेगा। Because the post of the box, the box of the post is authorized. क्योंकि वो जो डाकघर पत्र पेटिका होती है वो गवर्नमेंट द्वारा वो स्वीकृत नहीं होती। And the murti in the altar is also authorized by Shastra. The murtis in the altar is also authorized in the Shastra. और जो मूर्ति होती है भगवान का अच्छा विग्रह होता है ये शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। Similarly, God has an authorized representation in the deity's form, which is called Archa Vigraha. तो इसलिए जो है क्योंकि भगवान की मूर्ति होती है वो द्वारा बनी होती है इसलिए उसको जो है अर्चा विग्रह कहा जाता है। This Archa Vigraha is an incarnation of the Supreme Lord. और ये भगवान का ही परम पुरुषोत्तम भगवान का ही अवतार है। God will accept service through that form. इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं अपना प्रमाणिक स्वरूप बना रखा है।
the Lord is omnipotent, all-powerful. Therefore, by his incarnation as Archa Vigraha, he can accept the service of the devotee just to make it convenient for the man in conditional life. भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अटल विग्रह रूपे अपने अवतार से भक्ति की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। But the impersonalists don't accept that, they don't believe in that. लेकिन जो निराकारवादी होते हैं वो इस प्रमाण को नहीं मानते, They don't believe in the Shastra. वे शास्त्रों में कोई रुचि नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। Then speculate with the Shastra. वे अपना मनोवैज्ञानिक मनोधर्म के द्वारा शास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं। Yeah. If you don't know who is your father, and you want to know who is my father, if you want to know, the best thing, the more direct way to understand, you ask your mother. अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके पिता कौन है, तो सबसे सुगम, सबसे आसान तरीका है कि आप अपने माता से पूछिए कि मेरे पिता कौन है, And there you will get the really answer. और आपको जो है स्पष्ट उत्तर प्राप्त होगा। So if you want to go, if you want to know who is God, इसलिए अगर आपको जानना है कि भगवान कौन है, you go ask the Shastra. तो आप शास्त्र से पूछे भगवान कौन है। The Shastra is the breathing of Narayana. The Shastra is the breathing of Narayana. शास्त्र जो है भगवान की वृत्ति है, नारायण की वृत्ति। That is absolute. जो शास्त्र जो है भगवान की सांस, जो सांसों के ऊपर होता है, और वो पूर्ण है। So, for a devotee, there is no difficulty in approaching the Supreme immediately and directly, but for those who are following the impersonal way to spiritual realization, the path is difficult. इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार स्थिति का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। Yeah, and that is what Krishna say in the beginning of this slok. Klesha, klesha vikatarastesham. Klesha means difficulty. तो यही जो है भगवान श्लोक में बताते हैं, क्लेश का मतलब होता है कष्ट। Klesha means also suffering. और दूसरा यही होता है suffering, कष्ट, पीड़ा। So for impersonalist people, it's difficult to get spiritual realization and go back to Godhead. तो इसलिए जो है निराकारवादियों के लिए बहुत ही ये मार्ग कठिन होता है, और वो भगवान के परम धाम को नहीं प्राप्त हो पाते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. The impersonalists, they have to understand the unmanifested representation of the Supreme through such Vedic literature as the Upanishad, and they have to learn the language, understand the non-perceptual feeling, and realize all that process. उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूति को समझना होता है, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है, जो सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। And that is very difficult. और ये बहुत कठिन है। Bhakti yoga is sweet activities. और भक्ति योग में बहुत मधुर कार्य है। Chanting, dancing, take prasada, worship the Lord. कीर्तन करना, नृत्य करना, प्रसाद पाना और भगवान की अर्चना
is direct way. There is also authorized way, but indirect. For example, Vedic process. Vedic process is undirected. Yeah. But Bhakti Yoga is direct. This is not very easy for common men. The activities of the impersonalist is not very easy for any common man. A person in Krishna consciousness engaged in devotional service simply by the guidance of the bona fide spiritual master, simply by offering regular obeisance unto the deity, simply by sharing the glory of the Lord, and simply by eating the remnant of foodstuff offered to the Lord, realizes the Supreme Personality of Godhead very easily. कृष्ण भावना मात्र गुरु के स्पष्ट प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्थात विग्रह की नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उत्कृष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है. Bhakti Yoga is much more easy. और ये बहुत सरल सुगम है. When we start to chant in the Maha Mantra every day, we get superior health. तो जब हम भक्ति योग में प्रत्येक दिन जो है माला करते हैं, भगवान का नाम लेके व्रत करते हैं, तो हमें जो है उसकी लत प्राप्त होती है. We start to understand more and more the philosophy. और हम जो अच्छी तरह से सिद्धांत को समझना शुरू कर देते हैं. Yeah, and like that we get utsaha. और इस तरह से हम जो है उत्साह हमारे अंदर आता है. There is no doubt to the impersonalists are unnecessary talking a troublesome path with the risk of not realizing the absolute truth as the ultimate end. इसमें दैनिक भी संदेह नहीं है कि विशेष बातें व्यक्ति ही कारक पद को ग्रहण करते हैं. That the personalist, without any risk, trouble or difficulty, approach the Supreme Personality directly. किंतु तमोवादी बिना किसी कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं. Krishna is the best friend. Krishna is the best friend. कृष्ण हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं. Suridam Sarva Bhutanam. कृष्ण कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां. And he helped. When we chanting, he helped. और भगवान हमें जो है मदद करते हैं. A similar passage appears in the Srimad Bhagavatam. It is stated there that if one ultimately has to surrender under the Supreme Personality of Godhead, the surrendering process is called Bhakti. But instead take the trouble to understand what is Brahman and what is no Brahman, and happen in one life on that way, the result is simple troublesome. ऐसे ही सुंदर श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है. वहाँ यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं. तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, किसी को समझने का प्रश्न आजीवन उठाता है, उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है. Therefore, it is obvious here that one should not take up this troublesome path of self-realization, because there is unnecessary in the ultimate result. यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार में इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है. A living entity is eternally an individual soul.
If he wants to merge into the spiritual world, he may accomplish the realization of the eternal and unknowledgeable aspect of his original nature, but the blissful portion is not realized. जीव शाश्वत रूप से देश की आत्मा है और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में सदाकार होना चाहता है तो वह अपने मूल प्रकृति के शाश्वत तथा ये निश्चित पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती. By the grace of some devotee, such a transcendentalist highly learned in the process of jnana yoga may come to the point of bhakti yoga or devotional service. ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है उस समय निराकार वाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है. At that time, long practice in impersonalism also become a source of trouble. उस समय निराकार वाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है. Because he cannot give up the idea. क्योंकि वो उस विचार को त्याग नहीं पाता. Therefore, an embodied soul is always in difficulty with the unmanifested, both at the time of practice and at the time of realization. अतः देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ सकता है. Every living soul is partial independent, and one should know for certain that this unmanifested realization is again the nature of his spiritual blissful self. प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म की प्रकृति के विरुद्ध है. One should not take up this process. मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को अपनाए. For every individual living entity, the process of Krishna consciousness, which entails full engagement in devotional service, is the best way. प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यक्त रहना होता है. If one wants to ignore this devotional service, there is the danger of turning to atheism. यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है. Thus, the process of centering attention on the unmanifested, the inconceivable, which is beyond the approach of the sense, is already expressed in this verse, should never be encouraged at any time, especially in this age. It is not advised by Lord Krishna. अध्यक्ष विषय एकाग्रता की विधि को जो इंद्रियों की पहुंच से परे है जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए. भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now I think that it's time for prasada. Maybe someone has one question. Yeah, one question. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आगे आ सकते हैं अपने नाम पर. Yes. You can speak in Hindi. He translates. That's okay.
also mentioned who originated from Krishna himself, right? So if Krishna is the original person, and all the Brahmas are individual entities, right? So, like impersonalists believe that we ultimately have to merge with the Krishna for the Lord or whoever it is or individual. So, how it is that they are individual entities because there was only one person originally who we say Lord Krishna. So, how we perceive our individual existence? How did we originate? If he was the only person, original person, then it seems like it is something right that we originated from Krishna only, and maybe universalists are thinking that way only, that finally we have to think the Lord Krishna. So, could you please explain? You can sit in, he will explain for people what he says. He's speaking Hindi. माता जी का प्रश्न है कि हम भगवत गीता से समझते हैं कि हम सब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हमारे परम पिता हैं और हम सब उनके जो है पाठक पात्र उनके जो अंश हैं और हमें पता है कि भगवान एक है और हमारी आत्मा भी जो है इंडिविजुअल है व्यक्तिगत है। लेकिन इस विशेष बात को ज्यादा बात नहीं मानते हैं और अंत में जाकर के जो हम शरीर को देख जाते हैं हमारी आत्मा जो है उनमें से महाविष्णु हो जाते हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान एक है तो हम किस प्रकार से उनसे अलग हो सकते हैं? That is commentary or that is question? Eh? You understand? No, but that is commentary or that is question? What do you say is commentary or is question? Question. Question. What is the question? Sit down, sit down. What is the question? Question? Yeah, what is the question? Question is basically this archetype. Eh? God is original entity. Pardon? God is original entity. From where we all have Sarva Karana, Karana. And even The origin of everything. even impersonalists thought that we ultimately we have to merge with God. So how are we different from impersonalists? It's different kind of impersonalist. We spoke today about 3-4 different kind of impersonalist. Someone then don't believe in God. Some impersonalist, some way of impersonalist don't believe in God. जो कई प्रकार के विशेष बातें होते हैं वो somehow भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं। Others say everything is God. और एक कहना कहते हैं कि भगवान हर चीज भगवान है। The pantheists say everything is God. तो महाराज ने सबसे शुरुआत में बताया था कि जो होते हैं वो कहते हैं हर चीज भगवान है। The Mayavadis don't believe in God and say everything is Maya. और मायावादी हर चीज को माया मानते हैं। So it's different way of impersonalist. तो ये विभिन्न प्रकार के निराकार हैं। The Sunyavadis are also impersonalists. जो शून्यवादी होते हैं वो भी निराकार हैं। And they say that is Maya, and after Maya everything is empty. वो कहते हैं कि माया के उपरांत हर चीज शून्य है। So there is different philosophy of impersonalism. तो It's not only one kind. It's different kind. तो निराकार वादियों की प्रकार के सिद्धांत होते हैं। Mayavadis, followers of Shankaracharya, Buddhist, pantheist, it's a different philosophy. मायावादी शंकराचार्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं और जो वैश्विक होते हैं उनकी अलग सिद्धांत हैं। And everyone have what them deserve. Someone is more ignorant, another is less ignorant, another knows something.
तो ये सभी जो है अज्ञानता में ही रहते हैं। कोई ज्यादा अज्ञानी है तो कोई कम अज्ञानता है, तो ये सभी अज्ञानी है। And that is by the mercy of the Paramatma. और इसीलिए उनको The Paramatma gives for someone what he deserves. तो ये सभी भगवान परमात्मा की कृपा से उनको प्राप्त होते हैं। परमात्मा हमें वही देता है जिसकी हम इच्छा करते हैं। Yeah. Someone has knowledge 1%. तो किसी को 1% ज्ञान हो सकता है, Other has knowledge 25%. किसी के पास 25% ज्ञान हो सकता है, Narada Muni has knowledge 100%. और किसी के पास 100% ज्ञान हो सकता है। So different kind of knowledge then get by the mercy of the Paramatma. तो हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है भगवान परमात्मा की कृपा से। He is the supreme controller. वो परम पूर्ण नियंता है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. So that is, you understand the answer? Yes. It's different philosophy. This different philosophy, but no anyone. There is no one way of impersonalist to go back to Godhead. There is not. सिद्धांत माया वालों के अनेक सिद्धांत हैं, लेकिन किसी भी सिद्धांत को पालन करने में हम भगवान के परम धाम को नहीं प्राप्त हो सकते हैं। Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Thy God Premanande. Thank you for your attention. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर हमें बताया कि मूल पुरुषोत्तम भगवान ने क्या अभिव्यक्तियां हैं और क्या निराकारवादी साकारवादी हैं। महाराज जो है सन्यासी हैं और परम पूज्य लोग स्वामी गुरु महाराज के सन्यासी हैं। वैसे मूल जो अर्जेंटीना से है, एक बार महाराज को जो है हरे कृष्ण नाम बोलकर के महाराज का धन्यवाद देंगे। सुंदर कक्षा की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य रूप स्वामी महाराज की Thank you for your translation. Hare Krishna.